Can you able to see my screen? Yes. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيम. So जो पहला जो है पीपीटी में हम ये देख रहे थे कि जो है व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मानी क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं. So what is the exact meaning of communication? That was the first presentation. So now I would like to share about this counseling techniques. Sorry. So this counseling techniques. So counseling techniques के बारे में चंद चीजें बोलकर I would like to explain slide by slide in practical things क्या क्या हो रहा है बोलकर. The counseling is a process as well as a relationship between the persons, the counselor and the counseling. Counseling is a scientific process of assistance extended by an expert in an individual situation to a needy person. Counseling involves a relationship between two persons in which one of them is counselor attempts to assist the other, not to bless, not to advise. Okay, advice भी आ जाता है. It's a combination of that. Not to judge, not to bless, and not to penalize. Punish करने के लिए इस काउंसलर को कौन सा भी अथॉरिटी नहीं है. Attempts to assist. Just it's an attempt, not assurance. It's an attempt. Attempts to assist the others, counselee or the client. इनको हम पेशेंट नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ क्लाइंट ही बोलना चाहिए. And so organizing himself to attain a particular form of happiness, adjusting to life situation or self-actualization. तो यही जो है मैं कम्युनिकेशन में बता रहा था. If you have the capacity to make the opposite person to understand, to feel, or to make him actualize, self-actualization कराने का जो है खुद आप में है, you do that, then you are a successful counselor. तो ये जो है आप में आ जाना है. तो ये, if you ask me, is it any course, is it any degree, is it any qualification which brings that? No, I will say that counseling is an art. इसको जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सी पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, but you should aware of the techniques, you should aware of the good things and the bad things. Next comes. So these are all the theories. I don't want to take much time explaining about Carl Rogers. तो इनके बारे में बोलना है बोलेंगे तो they have contributed a lot of things in the field of psychology and counseling, particularly counseling. ये जो है it's an okay, इसमें दो perspective है. I'm taking directly to that. Two perspectives are there. ये client center है, एक counselor center एक है, और एक combination of एक है. क्योंकि if you go on inside the theories, वो थोड़ा confusion में रहेगा, because everything is theoretical base में नहीं कर सकते यहाँ पर. So I'm taking to that point. Client center, जो client का जो है मुनाफा के लिए, client के फायदे के लिए, client के perspective में client जो achieve करना चाहता है उसको success करे. काउंसलर क्या अचीव करना चाहता है, काउंसलर्स के लिए क्लाइंट्स को बदला दें. ये जो है क्लाइंट सेंटर बोलते हैं, ये काउंसलर सेंटर बोलते हैं. द नेक्स्ट कम्स द काउंसलिंग एम्स टू व्हाट? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट. तो ये अंदाज में काउंसली द क्लाइंट अप्रोचेस द काउंसलर. देन पर्पस ऑफ काउंसलिंग में क्या आता है? There is advice. Advice stands for A for assistance, D for development, V for vast information, I for inspiration, S for solution, and E for encouragement. ये तमाम चीज जो है, 6 perspectives जो है, client is expecting, but do not the same list लेकर नहीं आएंगे. Very good. Alhamdulillah, we have children also participating, upcoming counselors. Good. तो ये जो है काउंसली तो पार्टिसिपेंट उनके जहन में ये तमाम चीज पाए जाते हैं.
he wants to get assistance, he wants to get developed, तो इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहता है, हाउ टू हैंडल, हाउ टू लर्न करना चाहता है, इंस्पिरेशन करना चाहता है आपसे, वो सोल्यूशन चाहता है, उसका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है, और एनकरेजमेंट, उन्होंने जो अच्छे काम कर लेकर रही उसको एनकरेज करना है। तो ये जो है दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, अब इट कम्स डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड elective counseling. These are the three types of counseling based on the theories of different personalities, more particularly Carol Rock. So the next comes directive counseling के बारे में perspective क्या है बोलकर मैं आपको बोलता हूँ। This approach of counseling is advocated by Williamson. ये जो है counselor centered. The counselor directs the client to take steps in order to resolve his conflict. इसमें जो है काउंसलर के पास वो टूल रहेगा, वो प्लान रहेगा, जिस पर वो काउंसलिंग को जो है क्लाइंट को खींच लाएगा, खींच लाकर जो है हमें जैसा बोलते हैं वैसा करो भाई, हमें जैसा बोलते हैं वैसा बात करो भाई बोलकर उनको इनके तरफ लाना। तो काउंसलर विल हैव ए प्लान, विल हैव द एजेंडा, ही विल ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट। It is based on the assumption that the client cannot solve his own problems for lack of information. The counselor plays an important role. He tries to direct the thinking of counseling by information, explaining, interpreting, and advising. It gives more importance to intellectual aspect than emotional aspect. अब रही बात, मैं आपको और एक मोटी मिसाल भी दे सकता हूँ। अब जो है मियाँ बीवी झगड़े में आए थे आपके पास, मियाँ बोलता है बीवी मेरा देखने का अंदाज अलग है, गुस्सा करती है, जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे टेंशन हो जाता है। तो हमें क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारा टेंशन एक तरफ रखो, तुम्हें ज्यादा पढ़कर नहीं, तुम्हारी बीवी को नहीं पहचान सकते, वो बच्ची को माँ तुम्हें ज्यादा इनको पहचान नहीं सकते, अब तुम्हें दोनों मिलना है, खुशी से रहना है, एक काम करो आंख बंद कर लो, आंख में पट्टी बन लो। सी हियर द काउंसलर इज एडवाइजिंग, द काउंसलर इज गिविंग सम प्लान टू एक्ट ऑन दैट। वो दो लोग जो है अगरचे दो लोग जो है विथ गुड कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट ऑफ दिस काउंसलर, इफ दे डू दैट दे विल गेट सक्सीड। सर काउंसलर बोले बात नहीं करना, काउंसलर बोले आंख बंद कर लेना, रूम के अंदर चले थे, मियाँ भी खुशी से रहना, सूरत ना देखे तो प्रॉब्लम हदेरा कर लो कमरे को, बात करने को बोले हजरत, सर बात नको करो बोले काउंसलर। ये प्लान किसका है? क्लाइंट्स का प्लान नहीं है। But end of the day, who is going to get benefit? The clients. But the idea is totally, that is why it is said counselor centered. तो ये जो है हर क्लाइंट के साथ हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो एथिकल इश्यूज बहुत से हैं उसमें, हमें उनको जो चेंज नहीं करा सकते। बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट, एक जो है अनक्वालिफाइड क्या बोलते, एक विलेज से कोई आता है, बहुत दूर से आते हैं, उनको समझ नहीं है, तो वैसे लोगों को हमें बोलना इन ऑर्डर टू अचीव दिस यू डू दिस, बस उतना ही। बट दैट इज नॉट द रियल सक्सेस, मैं बोलूंगा दैट इज क्लियरली जो है इन्फ्लुएंस्ड वन एंड ट्यूटरिंग वन, विच अच्छा मैं बहुत बोलना चाहता हूँ इस पर, मैं वक्त भी कमी है, मैं शॉर्ट से बोल देता हूँ। देखिए टीचर्स दे गिव वन वे ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन टीचर्स जो बच्चों से करते हैं ये जो वन वे है। दैट इज द रीजन व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड the categories minor and major. They have given the authority, they are giving the license to the person who is more than 18 years. Majority बोलकर जो है 18 साल के बाद उनको टू व्हीलर चलाने का लाइसेंस देते हैं, और 18 साल के बाद वोटिंग अथॉरिटी देते हैं, he becomes major, till that he is dependent. वो जो है if you take it in the school curriculum, you will find that the children are getting one way education. जब तक आप +2 पढ़ते हैं, PU पढ़ते हैं, तब तक टीचर्स बोलते रहेंगे भाई हमें जो बोलते हैं वो पढ़ो, ज्यादा सवाल करो, हमें जो बोलते हैं वो पढ़ो, मार्क अचीव करो, हमें जो बोलते हैं वो करो। ये कॉलेज को आने के बाद टीचर्स नहीं रहते हैं, उन्होंने दे बिकम लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स। ये जो बच्चा है 18 साल की उम्र में होने के बाद ही नेवर इन्वॉल्व इन गोइंग विद द ग्रुप, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता, आजादी हो जाता है, आजाद हो जाता है। देन ही लर्न्स and he asks questions, bachelor degree में, master degree में he starts doing the research and MPhil करा, इनका आइडिया जो है सब्जेक्ट से बदलता है,
और इनका थीसिस पीएचडी से बदलता है। सी एज वी ग्रो, टाइम ग्रो। ओके, तो मैं ये बोलना जरूरी समझता था कि जो है टीचर्स का भी जो है काउंसलर सेंटर जैसा ही जो है उनका जो वन वे है, इसी तरह ये भी जो वन वे रहता है। नंबर 2, ओके, डायरेक्ट काउंसलिंग में जो है स्टेप 6 स्टेप्स जो फॉलो किया जाता है। इट्स जनरल एवरीवेयर द सेम थिंग बट स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस है। फर्स्ट स्टेज इज टू एनालाइज, फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज इट द इशू, सिंथेसाइज करना है, डायग्नोसिस करना है, प्रोग्नोसिस पर जाना है, देन काउंसलिंग देना है, देन फॉलो अप करना है। और इसमें मैं ज्यादा तफसील में बोलना चाहता हूं मगर इट विल टेक 1 to 2 hours टू गिव। अब बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे और एक मौके में इंशाल्लाह मैं इस पर सिर्फ इस पर अलग बात करेंगे। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। अच्छा, ये जो है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, hence this method can be adopted when an early solution is required। अब मैं बता रहा था मियाँ भी में झगड़े आ गए हैं, जो बात करने से झगड़ा क्या है वो हमारा मकसद नहीं है, अचीव करना है। देन विल से दैट यू क्लोज योर आइज, यू डोंट सी योर वाइफ, यू डोंट सी योर हस्बैंड, डोंट टॉक, गेट इन्वॉल्व इन योर लाइफ। तो ये जो सोल्यूशन, इसको जो है बहुत ज्यादा लंबे जो है प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में आप लेकर उनको करा सकते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ काउंसलर सेंटर्ड थेरेपी। और दिस मेथड इज बेस्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास जो लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग आते हैं, इफ दे आर प्रोफेशनल पीपल्स, इफ दे हैव दैट कैपेसिटी, दे विल रिजॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, दे वोंट कम। जिनके पास इश्यूज हैं, वो जो मामूली लोग रहते हैं, जो समझते नहीं है, समझाना आता नहीं है, तो उन लोगों रहते हैं, तो उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, हमें माइंड ओवर कराकर वी कैन टेक इट इन आवर ओन वे। बट एथिकली बोलता हूं मैं, दैट इज नॉट द राइट थिंग, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, एट होम, एट ऑफिस, कहाँ चले जाओ, कौन आवाज ज्यादा बात करता है, कौन रोक डालता है, उसका ही चलता है। तो वही से अंदाज से भी जो है क्लाइंट सेंटर, ये बोलूंगा कि जो है काउंसलर सेंटर हो गया। दिस इज बेस्ट मेथड टू लोअर लेवल, वो ये बता रहा था मैं। इन दिस मेथड द काउंसलर बिकम्स readily available to help the client, which makes the client very happy. The client will say that हजरत के बारे में सोच कर भी नहीं देखूंगा मैं, सर आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट, आप बोलिए मैं फॉलो करूंगा। If all the clients are like that, then there is no issue. ये जो है will get only 20 to 30% clients like this. Okay, next. और demerits क्या है? In direct counseling, the client never becomes independent. अच्छा रख लीजिए, यही मैं आपका जिक्र कर रहा था। He becomes dependent, which is against the ethics. मेरे पास एक क्लाइंट आता है, आते ही मियाँ बीवी आते ही, मैं उनको प्रिपेयर कराता हूँ, समझने रखता हूँ, समझाने देता हूँ, पूरी चीज समझ गए, मसला हल हो गया। दे शुड नॉट डिपेंड ऑन मी, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन मी। इफ दे आर डिपेंडिंग ऑन मी, देन माई काउंसलिंग इज फेलियर। देन आई एम ए बिजनेस मेकर, आई एम ए बिजनेसमैन, मनी मेकर, आई मेड देम टू डिपेंड। गुलामी वो हरगिज नहीं है। आ गए, सीख गए, आप भी चले जाइए, मैं भी निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक स्कूल में जो है बच्चे तख्ते में लिखते थे, उस जमाने में एक किताब में लिखा था, मैं पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छी बात हो। तो उसमें क्या लिख कर था, बच्चे जो है तख्ते में जो लिखते थे, कोई एक लड़का क्या कर रहा है, एक तख्ता कोई एक वैल्यूबल थिंग्स लेकर चुरा लिया, चुरा कर पॉकेट में डालकर जो झाड़ के नीचे पूरे क्लास में बैठ गए हैं। तो फौरन जो गुम गया है वो बच्चा जो कंप्लेन करता है, मेरा जो है कुछ है कॉस्टली आइटम जो है जेवर कुछ गम गया बोलकर। तो उस्ताद बोलते हैं ये चोरी काम कौन करे बोलो, अगर कोई चुराया है बोले तो उसको सख्त सजा दूंगा मैं। अब बद अखलाक इंसान है वो, खराब इंसान, क्या सब आवाज करते हैं और बोल देंगे जो है यहाँ पर जो 15 बच्चों के अलावा जो कोई नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, सब बच्चों को आंख बंद कर दूंगा, आंख में पट्टी बंद दूंगा, बांध कर जो है सब लोगों को मैं चेक करूंगा, अगर किसी का मिल गया बोले तो सिर्फ वो बच्चों को मैं सजा दे दूंगा बोलकर। तो इन उस्ताद क्या करते हैं, जाकर ढूंढने, तो एक लड़का के पॉकेट में जो है वो मिल गया। तो फौरन बाहर निकाले, वो बच्चे को बोले कि जो है इसके बाद अगर चाहिए, ये लास्ट चांस है। वो बच्चा माफी मांगता है, हजरत में मालिक से उठा लगा, ठीक है इसके बाद मैं सजा मैं नहीं देता हूँ मैं, मगर इसके बाद वो नहीं करना, एडवाइस कर कर आ जाते हैं हजरत। फिर वो चीज सामने रख दिया गया, जिसका गुम गया है वो बच्चा उठाकर भी चला गया, खुश हो गया, ठीक है मैटर सॉल्व। 10-15 साल के बाद जब एक वो लड़का जो चुराया था, वो लड़का जो है उसके अंदर वो गिल्टी कॉन्शियस था,
वो लड़का बोला कि जो मुझे कोई नहीं देखा है, सिर्फ उस्ताद मुझे देखे थे। 15-20 साल के कई अर्जा के बाद जो है वो हजरत को मिलते ही मिलकर बोलते हैं, उस्ताद अगर उस दिन मुझे आप सजा देकर सबके सामने जो है मुझे जालिम बना डालते तो मैं जो है आज तक मैं चोरी रहता था, आप मुझे उस दिन एडवाइस करें, आज बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ। तो हजरत पूछे कौन सा इंसिडेंट, तुम्हें पूछते हैं। हजरत मैं वो क्लास में पढ़ता था, याद है क्या? याद है, मगर तुम्हें चुराए बोल के मुझे मालूम नहीं। नहीं ना हजरत, अरे बंदा, तुम्हें की आंख नहीं बंदे, मैं खुद आंख बंद लिया था। सी, वो हजरत ये बता रहे हैं कि जो है हाउ एथिकली इज फॉलोइंग दैट। मुझे भी जो है मेरे दिल में भी ये ना आ जाए कई 15 साल के बाद वो बच्चा को देखकर ये चोर को मैं जिंदगी दिया, ये चोर को मैं एडवाइस करा, मेरे में वो मैं पर नहीं आ जाना। तो ये जो है उस्ताद के पास रहा। तो बहुत बहुत जबरदस्त बात है इसमें से इनटेक क्या है, काउंसलर्स, वी आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन एनी वंस पर्सनल लाइफ। while we are interfering in that, we should take, we should resolve, we should give, and we have to forget there itself. सबसे बड़ी चीज दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, अदलियत करना बहुत जरूरी है। कोई जो है आपके पास प्राइवेसी लेके आ रहा है, जिससे बात भी नहीं कर सकता, वैसे मैसेजेस लेकर आ रहा है, तो आप सोचकर भी नहीं देख सकते, आप उतने उतने चीजें रहेंगे। तो आप क्या करना है, जेन्यूनली खौफ खुदा होना चाहिए आपको, आप उसको सीखना है, समझना है, वो रिजॉल्व करना है, और आप हट जाना है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना है। दिस इज एथिक्स, 100% एथिक्स। एंड उससे ज्यादा जो है बीइंग ए मोमिन, इट्स आवर ड्यूटी टू हाइड समवन्स प्राइवेसी। अगरचे दुनिया में, इस्लाम में जो है एक चीज को सख्ती से मना किया गया है तो वो झूठ है। फॉर द काउंसिलर्स, फॉर द कंसिलिएटर्स, फॉर द आर्बिट्रेटर्स, इट हैज बीन अलाउड। विद गुड इंटेंशन आप झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ ये जगह में और वॉरफील्ड में। बहरहाल मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मुफ्ती साहब हैं मेरे से बड़े, अब इल्म में जो है आप बड़े हैसियत रखते हैं तो आप उस पर ज्यादा बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि जो इस एथिक्स पर ज्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रेन्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई नो लॉट ऑफ काउंसलर्स। कई काउंसलर्स ऐसे भी हैं, देयर इज वन पर्सनालिटी, उन लोगों क्या चाहते हैं कि जो है दे वांट टू लिसन टू अदर्स, दूसरों को कहानी सुनना, तभी इनको पेट भरेगा, तभी इनको तसल्ली होगा, इंथुसियास्टिकली सुनेंगे। एंड लाइक सीरियल्स, वाचिंग सीरियल्स, जिस तरह सीरियल्स देखा जाता है इसी तरह जो है घर के कहानियां सुनना। और देर आर सर्टन पीपल विच आई सी इन जमात, जमात बोलेंगे तो मस्जिद के जिम्मेदारा में बोलता हूं मैं, नॉट जमात, मस्जिद के जिम्मेदारा। ये नहीं क्या, ये लड़का क्या भाई, मान इसका पूरा कहानी करता मुझे मालूम भाई, इन्हें 10 साल पहले क्या करता था मुझे मालूम भी भाई, स्कूल पढ़ते वो छुरी के साथ गलाटा करता था भाई ने, वो अखलाक है। ही यूज्ड टू सर्टिफाई, अल्लाह आखिर में इनको सर्टिफाई कराएगा। तो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट एज ए काउंसलर्स। हर हमेशा आप इसमें आकर जो है काउंसलर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, आपको जो है बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आप ये सब करेंगे तो ही यू कैन बिकम सक्सेसफुल काउंसलर्स, अदरवाइज इट इज नॉट। दुनिया में भी जिल्लत हो जाएगी और आखिरत में भी अल्लाह के सामने जो है जवाब देना पड़ेगा। दिस आर ऑल द थिंग्स मैं जंप करना चाहता हूँ। नॉन डायरेक्टली काउंसलिंग, ये जो है द स्कूल ऑफ थॉट, ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, दिस इज प्योरली क्लाइंट सेंटर्ड, दिस इज प्योरली क्लाइंट सेंटर। इन दिस द काउंसलिंग, अच्छा इसमें मैं एक चीज बोलना जरूरी समझता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ मैटर्स वी टेक हियर, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, यस। तो काउंसलिंग में मेरे पास एक केस आया था, आई वांट टू गिव दैट एग्जांपल। वो लड़का आ गया, आकर बोला कि जो शादी के बाद मियां बीवी में झगड़ा है, जमात से यहाँ से वहां से रेफर किए तो बुलाकर बात किया, तो शुरुआत में वो डिस्क्लोज ही नहीं किया। ग्रेजुअली सेड दैट सर अब तक मैं 3 लड़कियों को रेप कर चुका हूँ, अब जो है मुझे खौफ हो रही है मुझे। तो वो बच्चियां कहीं जिंदगी में आगे खड़ गए तो एक। और दूसरी बात, वाई ही हैज दैट फील, डू यू नो, द वाइफ, बिकॉज ऑफ द वाइफ, शी सेड दैट she has praised her husband, that this guy, मुझे अल्लाह सब लोगों से बोलती है अल्लाह मुझे इतना अच्छा शोहर दिया, इतना पाक साफ, इतना सही, इतना सच्चा, इतना अखलाक वाला शोहर दे दिया अल्लाह, तो मैं अल्लाह को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाउ अभी जो है वो सुनते 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 इस पे जो है गिल्टी फील शुरू हो गए।
Then he started saying that I did the mistake. What should I do? मैं बोला भाई this is not the place. This is not the place. And he has used the word, no one will tolerate that. Such a very worst thing he has done. I don't know. I don't want to disclose that because we are in a webinar. तो वो खराबी को मैं कुछ नहीं कर सका. इमीडिएट से जो है मैं एक बहुत बड़े आलिम दीन है उनको कनेक्ट किया. मैं उनको बोला तो उन्होंने बोला ये आदमी को खतलिज करना सब इतना बड़ा गलती कर दिया. नाउ ही फीलिंग फौरन बोले अल्लाह तौबा करो. फौरन वहां सेंटर में क्या करा, जाने मस्जिद में नमाज पढ़ो, ये रोता है करता है. हमें क्या भी कर नहीं सकते, भेज दिया. तो अगरचे ऐसे क्लाइंट्स आ गए. देन और एक क्लाइंट, शादी तय हो चुकी है, इट्स एन लव मैरिज. तो एक शादी तय होकर शादी के करीब आते 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 जो है अभी चेन्नई में चल रहा है वो, हैदराबाद में कैसा है पता नहीं है. वो उसे जो है शादी से पहले प्री मैरिज लैब इन्वेस्टिगेशन टेस्ट बोलते हैं उसको. तो उसमें जब पता चला कि जो है इज अफेक्टेड विद एड्स, जैसे ही पता चला ही स्टॉप्ड द मैरिज एंड ही इन्फॉर्म्ड दैट गर्ल. अब वो लड़की बोलती है कि जो है प्लीज डोंट स्टॉप मैरिज, लेट अस गो, आई डोंट हैव एनी इशू, बच्चे की जगह भी जरूरत नहीं है, तो यही सर्दी परवाह नहीं, मैं जीऊंगी. तो लड़का बोलता है कि जो है नहीं करना है. तो ये बढ़ते बढ़ते मैरिज गॉट पोस्टपोन्ड. आफ्टर वाइल, आफ्टर 3 months 6 months जो है दो फैमिली में लड़ाई शुरू हो गई. तो देन द मैटर व्हाट रेफर्ड फ्रॉम एडवोकेट पहचान के एडवोकेट इशू को लेकर हमारे पास आ गए थे. तो जब मैं काउंसलिंग किया था तब पता चला कि जो ये है. और वो लड़का कसम भी खाया, प्रॉमिस करो सर आप नहीं बोलेंगे बोलकर. मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता भाई. देन ए मोमेंट ही केम एंड ही रिवील्ड दैट दिस इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस. मैं बोला कि इट्स अ सीरियस मैटर, डेफिनेटली हैव टू डिस्क्लोज दिस. देन आई डिड. वो लड़की के पेरेंट्स को बुलाया मैं. It took several sessions. Gradually उनको समझा दिया सच्चाई यही है. अब वो लड़का जो है he wants to avoid, but your daughter wants to get married. You advise your daughter. Then they said that we don't have any issue. We don't have any issue because we want our daughter's life. उन्हें जिंदगी रहना चाहते. तो कितने मामला इसमें आ गए देखिए. तो क्लाइंट सेंटर बोलेंगे तो क्लाइंट चाहेगा कि जो है उसका अचीव करे, तो वैसे हालत में नहीं हो सकता. So this is a point. और it differs from कौन सा केस जो है काउंसलर सेंटर रहना है, क्लाइंट सेंटर रहना है, that we have to decide. Not immediately by seeing the face of the client. After undergoing 1 or 2 sessions only we will come to know what techniques to be used. With the matter we can solve this matter, we can help them, or we have to refer this. ये तमाम चीज जो है after 1 or 2 sessions के बाद ही पता चलेगा. Then the main function of the counselor is to create an atmosphere in which the client can work out his problem. We have to provide that opportunity. It is also known as permissive counseling. Okay, it's a type of counseling, emotional elements rather than intellectual. तो इसमें जो है क्लाइंट का इमोशंस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. क्लाइंट्स के इमोशन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. अभी ओके, सो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग केसेस सब है. इंशाल्लाह आई विल टेक इट लेटर इंशाल्लाह. So this is purely client centered. तो effective counseling करने के लिए क्या क्या जरूरी है? Let us go in that because in 20 minutes I have to cover. Sorry. Non-direct counseling में जो है the principles of acceptance and tolerance are extremely important in this approach. The basic assumptions related to the non-direct counseling approaches are the patient is given important than the counseling directions and investigations. मैं बताया ना आपको उसके इमोशंस पर, वो क्या चाहता है उसको अचीव करने के लिए. he comes there to customize. लीगली कर सकते, इलीगल थिंग्स पर नहीं कर सकते, इमोरल थिंग्स पर नहीं कर सकते. there are certain matters, इसमें इमोरल थिंग भी आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मैं बता देता हूँ. recently what happened, I got a call 4 months back. I got a call from Qatar. वहां से जो है एक न्यूली कपल्ड दिल्ली से जैसा मुफ्ती साहब वहां से रेफर हुआ मुझे. तो लड़का जो है बिलोंग्स टू चेन्नई, लड़की शी इज फ्रॉम सम अदर प्लेस. आई डोंट वांट टू मेंशन, आई डोंट वांट टू यूज दैट नेम ऑफ दैट प्लेस आल्सो. तो लड़का बोला कि जो है सर आई एम मैरिड टू सो एंड सो पर्सन, रियली दुनिया में जन्नत है बोलेंगे तो आपका लाइफ इज सर. मुझे इतना खुशी हूं, मुझे औरत क्या चीज है, क्या अखलाक वाली है, सब चीज में देख चुका हूं. तो आई एम वेरी हैप्पी. बट yesterday I got a shocking thing, sir.
while I was searching his Facebook or the old histories of, then I saw some photos and some videos that she's having intimacy with some so and so person. I got shocked and I asked her, what is this about? She said that accidentally something happened. I don't know. She was fainted. कोई उठा लेके चला गया कहते, उठा लेके जा कोई मिसेस को वीडियो रिकॉर्ड डराया कहते. Then I'm totally confused, sir. What to do? I don't know. Then further I did some research. I came to know that she got admitted in some hospital. She got aborted 3 times. And I saw photos of different persons, videos of that. She has having that habit of having maintaining that video also. She said that सब कुछ मैं बेहोश में थी तब हुआ मुझे. माँ बाप फॉरेन में है, लड़की यहाँ स्टे कर रही है. शी वॉज डूइंग कॉलेज, BSc कर रही थी. तो उस वक्त में क्लासमेट, उस्ताद, कोई ये सब देखने के बाद कंफ्यूज हो गया. वो ये एक इंसिडेंट है तो चलो मैं मान सकता हूँ, इतने ज्यादा मैं बोला कि भाई ही इज हैबिचुअल अफेंडर, शी इज हैबिचुअल अफेंडर, यू कैन नॉट स्टॉप हर. एट द सेम टाइम ही सेज दैट ऐसा एक लवेबल वुमन, मुझे खिदमत करने वाली, मैं दुनिया में काम भी देखा नहीं, मेरी माँ भी नहीं है, उतनी अच्छी खिदमत करने वाली, खूबसूरत, सब जुबान की पाबंद से. भाई जुबान की पाबंद हो सकती है, खूबसूरत, मगर जो चीज पाबंद है ना वहां पर नहीं है ना भाई, हम क्या कर सकते. तो अब मैं इसको रखूं, तलाक दे दूं. मैं बोला कि जो है दिस डिसीजन यू बेटर यू डिस्कस विद सम मुफ्ती. देन ही सेड दैट एक कंफ्यूजन रहने से एक उलमा कराम को मैं फिर कनेक्ट किया. मैं आई यूज्ड टू टेक माय, आई एम नॉट आलिम, I always, if any patient comes, I take it to that specialist. अब शरीर का मामला आ गया तो उन्होंने क्या बोला है, भाई ये ऐसे लड़की को वास्ते चाको तलाक है, सो तुम तलाक देखो फिर खत्म करो. He said to finish this marriage. Don't believe this girl. फ्यूचर में ये तुम्हारे बच्चे को क्या पालेगी, तो हरगिज नहीं. He said that I'm not accepting this. मुझे अंदर से जो है वो नहीं हो रहा है. They are living in Qatar. He didn't inform anything to his parents. Then finally, मुफ्ती साहब बोलने के बाद भी उन्होंने क्या बोले, नहीं सर मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ. She started crying. She said that अब हमना का जिंदगी नहीं है क्या, मैं गलती सुधर गई नहीं क्या, मैं मुझे माफ नहीं करना क्या तुम्हें. बोला अच्छा मैं माफ करा जा, चलो मैं क्या की फौरन उम्रा को चले गए उम्रे को. देन आफ्टर 1 month के बाद उम्रे जाको आपको 1 महीना कुछ बातचीत नहीं. आफ्टर 45 days or 2 महीने के बाद she called me. I mean he called once again and he said that sir अब मैं देखा तो और एक नया आदमी के साथ वीडियोस आ गए सर, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड. फिर लड़की को लेकर हमें ODR बोलते हैं, ऑनलाइन में जो है कन्वर्सेशन करा, काउंसलिंग किया बहुत. देन शी कन्फर्स्ड एवरीथिंग. शी सेड दैट यस यस्टरडे आई स्पोक टू सो एंड सो पर्सन, वी हैड अ वीडियो चैट एवरीथिंग. तब इन्होंने बोले कि जो है क्या जी तुम्हारे माँ बाप इंसान इतना जी तुम्हारा बोलते नहीं करते नहीं क्या. We went for Umrah. You had a talk with your mother for more than 5 hours, 6 hours continuously. Then her mother is telling that Umrah जब गई तब से मुझे फोन में बात कर कुछ नहीं हुआ. Then कहाँ किससे बात करे तुम्हें, बोला तो she said that before काबतुल्लाह वहां जाकर वो लड़का से बात हो लगी. What type of character is this? बोले कि मैं बोला this is purely, it is more or less जो है DID, disassociate identity disorder. She keeps changing her identity. यह आए तो अच्छा नाटक करना. सो मैं बोला कि देखो भाई शरीयत में जब उलमा का मुफ्ती बोल दिए बहुत सी चीजें बहुत सोच कर बोले ही. देन शी वांट्स टू कनेक्ट टू दैट मुफ्ती, वो भी कर दिए. मुफ्ती साहब के पास क्या पूछने मालूम क्या, हम ना हक नहीं है क्या, हमें इंसान आने क्या, हम ना जीना नहीं क्या, मर जाना क्या हमें. तो मुफ्ती साहब क्या बोले मालूम क्या, तुम्हें सजा गलती करे ही सजा पाना, शरीयत यही बता रहा. माफी नहीं, क्या अल्लाह से माफी मांगो भाई, शरीयत में जो बोला गया है इट्स क्लियर. फाइनली ये सब बोलने के बाद जो है आकर तलाक दे दिया गया, निकल भी गया. एनीवे, सो व्हाई आई एम टेलिंग हियर, ही वांट्स टू अचीव दैट क्लाइंट सेंटर्ड, बट उसमें गलतियों को हम गलत से नहीं कर सकते. इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग वी कांट असिस्ट देम, वी कैन मेक देम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग. सो उसके लिए उस वक्त में हम जो है वी हैव टू जंप from counseling to mediation, sometimes mediation to arbitration. और वो combination क्या मेडॉक बोलते हैं उसको. It's a combination of all these things. Solve करने के बाद we can go to legal part.
If something breach is there, something goes against, then directly we have to take the legal measures. We should not do anything there. We should not judge and we should not do anything. Anyway, so I have much things to discuss, but I'm restricting here. So ये जो है non-directive counseling में client wants to achieve, client wants to get enriched. कैसे देवी मैं पैसे देगा काउंसलर को रखो मैं बदला डालूंगा वो सोचेगा वो. That is not possible. That we should not do. Okay, sorry, I'm taking much time here. These are the steps which we have to follow in this non-directive methods. First, defining the problem, counseling given freedom to express his feelings, identifying the counselor's feeling. That's developing counselor's insight, termination of counseling. तो वहां पर देखे हम कि जो है only counselor center है, यहाँ पर client center है. Next comes elective counseling. This is what very familiar. Elective counseling is a type of counseling which is neither counselor centered nor client centered, but a combination of both. Here the counselor is neither too active as in directive counseling nor too passive as in non-directive counseling, but follows the middle course. So counselor should be very clever, very clever. अब देखो ये I got a मुझे एक client एक आ गए थे long back हो. क्या confusion रहा मालूम क्या? ये confusion जो है for half an hour extend हुआ मुझे. ये लड़का है या लड़की है? Yes, confusion. तो ये identify करने के लिए it took half an hour. And उसके बाद वो what is it? The client खुद बोले कि जो मैं उनको पूछ दिया था, मैं बोले कि yes I know sir what you are trying to ask, whether I am he or she. I was born he, but now I have become she. ये एक बहुत upcoming issue है. We have to identify that. इसको देखते कैसा पहचानना है? How can you ask? How can you come to conclusion by seeing the face itself? It's hide. और कौन कैसा, किसके अंदर कौन छुपे हैं, किसके अंदर क्या छुपा है, we don't know. That is the very 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 important. ये non-verbal आता है ये चीज. The counselor should aware of all these things. वरना जो है will be doing some wrong things. So we should have a combination of both. Sometimes counselor, sometimes client. ये दो भी जो है mix करके इस्तेमाल करना है. Characteristics of an elective counselor. Methods of counseling may change from client to client, as I was informing you, or when with the same client for time to time बदलते रहेगा वो. It's highly flexible, freedom of choice, and expression is open to both the counselor and the counselee. Both can take the chance of that. Experience of mutual confidence and faith in the relationship. The client and the philosophical framework are adjusted to save the purpose of the relationship. Our purpose should be goal. जो है we have to go with the goal. What we are going to achieve. Just घंटे बात करना, that is not the solution. And here I would like to say one more thing. Here on therapy is there. उसको जो है कई therapies हैं. Talking therapy है, free association therapy है. So the counselor should use a combination of all. Sometimes we should make the clients to talk. कहाँ तक? Till they reach their catharsis. When the catharsis will come, we have to promote it. We have to provoke them. We have to stimulate. We have to motivate. How we should achieve that. Once catharsis आ गया, तो हमारा goal जो है we have to fix the goal and we have to take that. कहानी बात करते जाएंगे. They will allow. They will talk. Keep talking. But we should define our goal. वो गोल के तरफ उनको ले जाना है. That is very very important. That is the reason that theory says that counselor centered. अब क्लाइंट सेंटर का तो तुम बहुत कहानियां सो तुम सुनेंगे. आए रास्ते में गाय देखे, भैंस देखे, कुत्ते देखे, सो बोलेंगे, सब सुनना पड़ेगा. No need of. हमें उनको we have to take in our own way. और ये इसमें जो है we have the same 6 steps. Establishing rapport first, diagnosis the problem, analyzing the case, preparing a
tentative plan for modifying behavior. I'm not talking about the treatment, the modifying behavior. What type of therapy you are going to choose, whether talk therapy, free association therapy, CBT, cognition behavior therapy, or rational changes, क्या लाना चाहते हैं, that you have to do. And we are not, see, counselors, okay, counselors are not clinical psychologists. ये जो है डायग्नोस करने में, परफेक्शन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने में, counselors are not supposed to diagnose that. If we have any issues, if you find any problem, we have to refer this matter to clinical psychologist. The clinical psychologist will analyze it and they will record it and they will give the results. Based on the results, they will give the recommendations. What type of therapy will assist them? So सबको बात कर नहीं हो सकता, किसी को बात नहीं करने से शिफा हो जाएगा, किसी को दिन में 5 घंटा 6 घंटा सोने में शिफा हो जाएगा. तो that the clinical psychologist alone can do that, since they are expert in their field. Next comes the counseling, then the follow-up. So इसमें advantages, disadvantages, limitations बहुत से ही, then I'm skipping this. Other types of counseling, short-term and long-term counseling, based on their lengthiest. There are CBT में आगे बोले तो 5 sessions, 7 sessions is not possible. You have to go for a multiple sessions, or once in a month you have to take follow-up for a year. You have to prepare a chart, you have to give a plan, you have to follow up that, and उनको एक assistance करना चाहिए, follow up. Sometimes role play रहेगा, psychodrama करना पड़ेगा. ये तमाम चीज जो है well plan करना पड़ेगा. For that it may take long term. And then based on the number of the people, counselees involved, we have to go to the individual counseling and group counseling. Family issues बोलकर आएंगे. मैं यहाँ पर एक गैप बोलना चाहता हूँ. Family issues में husband, where the husband wife involved. Do you know how many people are involved in that matter? If any husband wife is having any issues, problem, minimum a count of 100 people, 50 from her side, 50 from his side. इनके बारे में उन्होंने बात करेंगे, इन्हों खामोश रहेंगे. सबके सराह में परेशानी, हर नमाज में वही दुआ. उनके माँ बाप का तो बोलो ना को, हर हमेशा वही दुआ. ना उनका सेहत देख लेंगे, ना खाएंगे पिएंगे, ना खुशी रहेगा घर में, कुछ भी नहीं. बच्ची घर को आ गई, बेटा बहू नहीं से बेटा है, क्या करेगा. तो ये चीजें जो है, the whole family is getting involved if the couples got disturbed. So very important. If anything like that, then we have to go for a group counseling. Then you should decide the group counseling means कितने लोग. We cannot discuss with 10 people, 50 people. Yes, there are certain techniques. Alhamdulillah, मेरे सेंटर में मैं किया हूँ. 15 लोग, 18 लोग, 25 लोग अगर बैठेंगे, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ लड़का लड़की बात करके मैटर सॉल्व होगा. So we have to prepare that. वो स्टेज में लाने के लिए we have to prepare that. That is not a group counseling. It's a big task. उसको पीछे बहुत काम करना पड़ेगा. Then comes counseling environment. This is very important point. बहुत कमी है. Then I will try to push it. तो counseling environment में जो है कैसा रहना चाहिए? Counseling place. Welcoming करना बहुत जरूरी है. Greet the clients appropriately. We don't know what language they speak, from where they come. कोई बुजुर्ग आएंगे, आप उठकर जाकर सलाम बोलना पड़ेगा. दूर से उनका हाय नहीं बोल सकते. कोई जवान आएगा, अब इशारा काफी है उसको. तो एवरीवन मैटर्स, किसी को कम नहीं समझना है. तो ग्रीटिंग बहुत जरूरी है. कंफर्टेबिलिटी, वंस ही एंटर्स द सेंटर ही शुड फील कंफर्ट. बैठने का सीट से लेते हुए, छीने की दीवार से लेते हुए, लाइटिंग से लेते हुए, आई एम गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट. द प्लेस विद फील डिस्ट्रैक्शंस का भी नहीं रहना. नो टेलीफोनिक नॉइसेस, बाजू की आवाज पुकार नहीं रहना. समवेयर privacy and confidentiality can be maintained. Non threatening रहना चाहिए. A place where people can feel. Police station के बाजू काउंसलिंग सेंटर के बाजू तो वो भी एक थ्रेट हो सकता है. At the same time वो भी रहना भी जरूरी. तो we should know the parameters. And then 5 sense. See, counselor's role is very minimum. But the 5 sense, if you follow this 5 sense, that it's self-sufficient to achieve 51% results. Let me show what it is. ये 5 सेंस जो हम लोग जिक्र मैं जब भी बता रहा था आपको, ये जो है स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट. दिस इज very important. Very important.
लेट अस गो वन बाय वन. साइट सेंटर में जो है देखने का निगाह, देखने की चीजें, कलर, इक्विपमेंट्स, राइट, ये कैसा रहना चाहिए, और ब्राइटनेस, लाइटिंग कैसा रहना चाहिए. सी देयर इज वन फोटोफोबिया इज देयर. वो जो है up to 80% of people who get them having photophobia. अच्छा, ओके, फोटो लाइट जो है हद से ज्यादा हो गया, इसकी वजह से दे मे गेट इरिटेट. और आप घर से बाहर निकलो, सूरज को एक बार देखकर, नेक्स्ट आप बात सोचिए, आप डायरेक्ट सन को देखकर एक 5 मिनट्स आपका जहन में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा. यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल हैव अ पेन. काउंसलिंग सेंटर के अंदर जो है उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स, प्रॉब्लम्स और सब सोचने का ब्रेन सेंटर्स में इस पर दबाव पड़ा अगर लाइट का, तब क्या होएगा? डेफिनेटली देयर विल बी इशू. यू विल नॉट रिवील एनीथिंग, यू विल नॉट फील कंफर्ट. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द रियलिटी? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट कम्स द हियरिंग. आप जो अल्फाज बोलना चाहते हैं उसका जो है पिच, जो अंदर जो इस्तेमाल करते हैं आवाज, और जो सेंटर जो लोकेट होता है, मार्केट प्लेस, भाजी मार्केट और बस स्टैंड, नियर नेक्स्ट टू बस स्टैंड, वैसा नहीं रहना चाहिए. एकदम जो है सफिस्टिकेटेड, वो एकदम अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, लिमिटेड, बट यू शुड हैव दिस 5 पैरामीटर्स टू बी मेंटेन. हियरिंग 70 डेसिबल्स से ज्यादा आप सुनेंगे तो, इफ यू हियर फॉर मोर देन 50 to 1 minute, you will have pain. आप हेडफोन इस्तेमाल कीजिए जिसपे जो है 60 to 70 डेसिबल्स जो है वॉइस थ्रो करेगा, साउंड वेव्स. थोड़ा साउंड ज्यादा रखकर सुनिए एक पाव घंटा, क्या होगा? निकालते कान से जो दर्द देगा. क्यों दुखता है आपको? द रीजन इज द डेसिबल. आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, कोई बड़ा ट्रक आकर जो है हॉर्न हॉर्न बोलकर आवाज करता है, कितना देर सुन सकते हैं आप? फॉर मैटर ऑफ 1 2 3, उतना ही. उससे ज्यादा सुनिए आप, कान फट जाएगा, सर दर्द लगेगा, ब्रेन सेंटर्स में सब चीज भूल जाएंगे आप. तो काउंसलिंग सेंटर्स में जो है आपका पिच, नॉइस, इसका जो है टेक केयर ऑफ दैट. एंड टेस्ट, जैसे अंदर आता है द क्लाइंट, आदमी हो औरत हो, उनको पानी देना या कॉफी प्रोवाइड करना, ठीक है, कोई चीज ऐसा लिख जाना. हम काउंसलिंग में वी हैव डिफरेंट टेक्निक है. काउंसलिंग में जो काउंसलिंग बात करते ही रहेगा, अच्छा, उसको जो है डोपामिन थोड़ा बूस्ट करना है, ऐसा करेंगे हम. उसका जो मूड चेंज करना, खुश कराना है. देन व्हाट विल डू, विल प्रोवाइड कॉफी, विल प्रोवाइड स्ट्रॉबेरी जूस, सिट्रस जूस. ये जैसे लगेगा तो फौरन उसके अंदर जो है स्नैप्सिस फास्ट हो जाएगा, इमीडिएटली विल गेट मूड. अच्छा, तो कॉफी, चिकोरी अंदर जाता क्या होता है? इट्स ए न्यूरोस्टिमुलेंट. द मोमेंट ही गेट्स, प्रोवोक हो जाएगा. गुस्से के आदमी को कैसा थामना, थामने वाला को कुछ भी नहीं है, उससे कैसा गुस्सा कराना, गुस्सा नहीं कराना, प्रोवोक कराना, टू टॉक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक. वी हैव सर्टेन टेक्निक्स, बट वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर लिमिट. नेचुरल सोर्सेस आर देयर. लाइम है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, कॉफी है. These are all taste, and you can go for aroma. Next time coming to that. तो ये सिर्फ यहाँ से we have to limit. We should not go to enhance some other things by using some medicines, which is totally against the ethics. Then the touch, very 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 important, very very important. Touch releases oxytocin. It relieves from anxiety, stress. So जब भी आकर क्लाइंट काउंसलिंग सेंटर के अंदर बैठते हैं, जो बैठने का सीटिंग है ना, ये लोहा का, पुरानी चीजें, डस्ट, वैसा नहीं रहना. अगर बैठे तो शुड फील रिलैक्स. अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. Then by seeing the colors, by seeing the people, by seeing the counselor, the tone, he should say that मेरा जगह भी, I am comfort here. भाई चारों तरफ कैमरा रखो, मैं कैसा बैठता हूँ, उठता हूँ, किसके बात करता हूँ, सब नोट करते हैं. नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. If you want to follow that, it is the legal matter. You have to mention somewhere that the whole center is under camera surveillance. You have to
keep writing on all these things. Anyway, so जो बैठने का चीज है, टच है, ये जो यूज करते चीजा, इस पे भी जो है ये रहना चाहिए, स्मूथनेस रहना चाहिए. तो बहुत बारीकी से वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस. This plays very very important role. The next comes the smell. सेंटर में ऐसा ना हो जाएगा अंदर आते बाहर कब जाए. एसी सेंट्रलाइज्ड एयर रहना चाहिए, कूलिंग रहना चाहिए. एट द सेम टाइम हाई चिल्ड भी नहीं हो जाना चाहिए, बदबूदार नहीं रहना है. ठीक है. एंड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग ईथर. बहुत बहुत अहमियत है उसकी. माइंड में जो है, जो ब्रेन सेल्स हैं, every moment by inhaling good things, good aroma, the cells are getting regenerated. बदबू सुनो degenerate होता है. The brain centers which we are going to work on should be fresh. Then only we can do that. Otherwise, it is highly impossible. So these 5 senses are very, very, very important, essential. This plays 51% in success. क्लाइंट अंदर आकर जो है ये कॉन्फिडेंस जीत लिया तो समझ जाइए यू आर सक्सेस, यू गॉट सक्सेस. 51% जो है वो अचीव हो जाता है. देन आपसे बात करने लगता है तो ओपनिंग स्टेटमेंट एंड नरेशन ऑफ द फैक्ट्स ये सब आएगा तो विच इज वंडरफुल. क्या बोलने का वो मेथड्स है. वो ये सब करते करते ही विल रिवील एवरीथिंग. बोला सर मैं कैसा बात कर रहा हूँ मुझे पता नहीं. आई हैव रिवील्ड एवरीथिंग टू यू सर, फैक्ट्स. And don't believe all clients that in the first sitting itself they will reveal everything. So बोलेंगे हाँ हाँ ओ जी जी बोलकर. कहती उनके अगेंस्ट एक बार बोल को देखो भाई काउंसलर बरोबर नहीं भी है, पैसे ले ले आप न बरोबर भी और न बरोबर नहीं भी. Directly they will repeat it. Okay, next comes. अच्छा, the qualities of the counselor. I have only 10 minutes. The qualities of the counselor: self-awareness and understanding. Self-awareness is the ability to look within the and identify your own unmet psychological needs and desires. And then मैं jump करता हूँ. Good psychological health, which is very very important. अब जो है counselor आते हैं, counselor she himself involved in some family matters and they got disturbed. घर में शोर से लड़कर आए हैं, बीवी से लड़कर आए हैं. अच्छा, और एक चीज भी बोल देता हूँ. जब मैं साइकोलॉजी जो मैं अलग से मैं आई हैव learned psychology from different universities. I have met so far. I have met number of psychologists. उनके साथ लर्न किया हूँ, उनके साथ बैठना उठना सीखना, इंटर्नशिप किया हूँ. तो their observation they say that भाई साइकोलॉजी पढ़ना आते सो पूरे जब पहले पेशेंट अंदर आते सो एक बीवी हजरत शोहर के पास लड़ी रहेगी या शोहर बीवी के पास लड़े रहेंगे. वो लड़ाई में एक दूसरे को सीखने वास्ते उन्होंने पढ़ने आते. Do you know what is the ratio of that? 60%. 60% already they are patients. Already they are under wound. Already they are under stress. उसको रिलीव करने के लिए अंदर आते हैं. तो उन लोग जो है, if they are not well versed in their own life, if they are not sound in their mind, they don't have the psychological well-being with them, how they are going to assist others? This is not possible. So अगर 20 लड़कर आएंगे नो हजरत यहाँ बैठेगा और था ये पूरा और ना सच भी जजमेंटल. It's not a counseling. And he will give his opinion. और ना तो गलत करना वाले भी मर्द बने, कभी भी मर्द बने, उन्हें चाहे उन्हें आलिम भी रह जाओ, डॉक्टर भी रह जाओ, एडवोकेट भी रह जाओ, सब मर्द ऐसे भी. They used to brand it. That we are not supposed to do. That is the reason I assured you that what's that? Surgical प्रिपरेशन मेथड्स. उसमें क्या होता है, सर्जन चाहे कौन से भी एरिया से आ जाए, अंदर आए बोले तो हैंड वॉश करना है, ब्लो कर लेना है, देन ही हैज टू चेंज द क्लॉथ्स. उसके बाद एक गाउन पहनना है, हेड कैप पहनना है, शू कवर्स पहनना है. सोप करके अंदर जाने के बाद शू सब छोड़ा को नया जूते पहनकर ओटी के अंदर जाना है. ओटी के अंदर एक स्क्रीनिंग रूम है, वो रूम में जाने के बाद वंस अगेन और एक कवर पहनना है, वो जो है फुली स्टेराइल रहेगा. Then he has to close his mouth. Before closing his mouth, he has to take food, nourishment, ताकतदार अच्छा सो उठकर जो है, then only he is supposed to enter the OT. So let us take counselors. What we are going to do? We are going to do neurosurgery. We are going to do work on neurotransmitters. We are going to work on this cognition, thinking process. It's inside the mind, not the brain.
माइंड के अंदर जाना चाहते हैं हम, जाकर जो प्रोसेसिंग को टच करना चाहते हैं, then how clever and how clean we should be. So these are the protocols. The counselor should have a very high rich mental hygiene. I have come across several interviews in which there are certain centers they used to take counselors. I have attended, we have chosen alhamdulillah kei counselors who the basic, the first criteria what we eligibility what we analyze is whether he or she got married or not. शादी हो को 5 years सक्सेसफुल लाइफ है या नहीं, नहीं भी हो सकता, मे बी शोहर बाहर बस्ती में जा सकता, मगर शादी इज बेसिक क्राइटेरिया. इफ शी डोंट नो अबाउट द मैरिज, इफ शी डिडंट अंडरगॉन एनी स्ट्रेस, और हर मैरिज में स्ट्रेस रहता है, stress is good up to a limit. If it extends, then it becomes abnormal. So it's in physiological one, it's not in psychology, I mean pathology. While extends, extreme चले गया बोलते, acute हो गया बोलते, then it becomes pathology is there. So what I'm trying to say here is the person should be sound mind and rapport building skills, open mindedness. The counselor, a person who is free from fixed or preoccupied ideas. This is what I was telling. Okay, they are aware of their own values and their beliefs. अच्छा, इसमें जो है okay, in particularly maybe in your counseling center you may receive only Muslim clients. इसमें भी जो है we believe that Almighty Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are certain people they do shirk, they do some bidat, they come wearing t-shirts, jeans, वो भी आधा बजे पेन लग रहा थे. अब उनको कपड़े देखकर जो है हम नहीं करा लो, हमने ये नहीं बोलना गेट आउट, नहीं बोल सकते हो. We should not harm, we should not take it in that way that she's not okay, he is not okay, she is by the dress code itself हम उनको खराब से भी नहीं देख सकते. We are not supposed to do that. So we should be very open minded, we should keep our mind open to understand and make them to reveal things. तभी जो है we can become a successful counselor. Trustworthiness बहुत बहुत जरूरी. You are not supposed to disclose anyone's privacy. For academic purpose, for the purpose of teaching, you can use the history, but you are not supposed to use anyone's name. You cannot identify anyone by this person is this person is this. You can use only for the academic purpose. And approachability. ये काउंसलर को मिलना, भाई तुम 10 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना, उनको तुम्हें तब पे करना, you have to wait, बोले स्टे मांगने के बाद भी खड़ा नहीं रखना, तो वैसा नहीं रहना. अप्रोचेबिलिटी बहुत आसान से रखना है. Then qualities of good counselor. मुफ्ती साहब अभी वक्त कितना है? Can anyone assist me by saying this? Is it I'm audible? जी 8 minutes. हाँ नहीं, मैं जो बोलता हूँ मैं ही खुतबा जैसा नहीं हो जाना, ऐसा नहीं है ना? नहीं. You are listening, right? Yeah, sure. We are following. Okay, this is counseling process. We have the same steps what we had for directive, non-directive, and the same procedure here. First relationship building होता है, then assessment होता है, then formulation of counseling goals होता है, then intervention on problem solving होता है, then termination and follow-up होता है. Then the relationship, there are 6 stages. I'll run it. First कर देता हूँ. Relationship building में जो है ये कैसा करना है? Introduce yourself, listen actively, empathy, gestures, ये सब देखना जरूरी है. Always address the person by his name or her name. बड़े लोगों को नको बुलाओ, हमारे वो अभी वो मेच्योरिटी नहीं है, आईटी सेक्टर का लेवल में नहीं जा सकते हम. बड़े लोगों को इज्जत से बुलाना है, उनको नाम बोलकर नहीं बुलाना है. Then observe non-verbal communication, which is very, very important, that is the reason why I made it first. Then the assessment and diagnosis, assessing through observation and inquiry, which is very, very important. Associating facts क्या है वो unknowingly ले लेना है आप. Hypothesis का होना बहुत जरूरी है. Record the information. And recording information का एक बहुत बड़ा एक science है वो, which comes under legal ambit, and at the same time which कौन सी चीज रिकॉर्ड करना, कौन सी रिकॉर्ड नहीं करना, बहुत श्योर होना है. Without the consent you are not supposed to record anything. एंड उन लोगों करेंगे, हमें क्या बात करते हैं बोलकर जो है हिडन कैमरास रख सकते हैं, उनसे भी कर सकते हैं. बी केयरफुल विद देम.
formation of counseling goals to change an unwanted or unwelcomed behavior. That is the goal. That should be the goal. To better cope, to make and implement decisions to enhance the relationship. Intervention and problem solving, characteristics of good treatment plan. क्या रहना चाहिए? Goals are clearly defined and reachable. उनको मालूम होगा करना है. Plan able to be adaptive with them. बहुत जरूरी, तभी अडाप्ट करेंगे. Positive and action oriented focus रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम लिखो दे, कई डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कोई भी लेते भी नहीं हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. Essential of an effective plan is client's motivation and willingness to follow. आप सक्सेसफुल ये करेंगे तो नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट टाइम आएंगे, दे विल फॉलो, अदरवाइज दे वोंट फॉलो. Termination and follow up. A role of reviewing progress. Even we have to inform that once in 15 days or once in a month you have to come attend, करना है, follow up करना है, वो channel रख लेना है. Think of its mean of empowering the client, or someone is taking care, they will have that feel. Termination, considering not just at the end of the successful relationship, but also is considered when it seems counseling is not be helpful. Then steps of success in counseling. Willingness उनको रहना चाहिए, he should get motivated, and commitment रहना चाहिए, and faith रहना चाहिए. The conclusion: effective counseling reduces confusion, allowing the clients to make effective decisions, not as the clients. The client should make effective decision. They should learn that is the goal of the counseling. And otherwise, they are dependent. We should not live like that. And leading the positive change in their attitude and behavior. That should be our goal. That is very, very important. An unresolved issue will be like a cancer with the potential of spreading into other areas of your relationship. This I'm concluding this counseling aspect. Okay, and then I think time up. The one more topic is there, that is conflict and resolution. I think time is not permitting. We'll go for directly question and answer session in this aspect. If okay, we'll go. Otherwise, we'll take some other day. The conflict resolution. Yes, Mufti sir. Hope you have understand this. Everything. Everyone is listening to me, and hope you will ask a lot of questions on this. Alhamdulillah. Good. Jeet, Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, for enlightening all of us with your vast knowledge and experience. I request you to cater some 10 minutes, around 10 minutes, if anybody has some questions. अगर कोई सवाल करना चाहे sir से please आप लोग कर सकते हैं. And please mind the time and not more questions. Sure, Thank you. So first of all, I have a question to you. Yeah, my experience has shown what we do is we usually follow up with the cases. Okay. Now, you mentioned one statement, like if the client comes back again and again for your advice, you told one very, a strong statement. You said that your counseling has failed. But then my experience has shown when we follow up the matters, after a time, again the problem crops up and it continues. And I was at times, there are instances where I was really fed up with the follow-up. Do you think what time should be, what exactly time limit should be for a follow-up? How many follow-ups we have to do with them? The same problem, the same challenge has been faced by some of our counselors who have just initiated working, who have reconciled the matters. But then when they go for follow-up, and they are very clueless as to how long they have to follow up. Okay. A really interesting and technical question this is. See, first of all, during counseling itself, we fix our goal. What type of counseling and what type of assistance we are going to provide. In that stage itself, we have to decide whether we have to continue this. See, I mentioned that there are two types of counseling. One is terms of counseling, short term and long term. For long term counseling, you need to give him some program saying that student, okay, just I'm giving a reference. Student, he wants to learn 1 to 1000. Within a day, it is not possible. What we'll say, beta tumhe ek mahina 1 to 100 सीखो, second month 100 to 200 सीखो,
So that plan, you fix it first. I think you should diagnose that client once again, what type of assistance he needs. If he wants to change his behavior, better you ask him to go for CBT, cognition behavior therapy, where he will have that plan of 3 months, 6 months, and then ask him to come once in 15 days, once in a month for follow-up. If the same thing continues, then you have to definitely refer that matter to the clinical psychologist for a clear assessment and a follow-up. So you have to fix it, madam. So here comes the counselor center. Here we are taking the role of that. We have to decide that. So I think I hope I answered the question. Thank you, Jazakallah, sir. And I open the floor floor is open for all of the respected participants. Kindly, आप अपने सवाल करिएगा. Please. Sir, I just also wanted to inform our counselors who have initiated the work. जैसे हमें मुफ्ती साहब ने कहा था कि एक हमारा छोटा सा इन काउंसलर्स का एक क्विक टेस्ट भी होगा. आप शायद कोई एक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करें to certify them. So that also we have to plan. And one more session you said is still left, and we can, if you can just coordinate with Mufti Sahab and be kind enough to arrange for that program. And also just let us know if they are supposed to get prepared for the examination shortly. I really am I'm appreciating you, because you have taken a very good initiative. Getting certified, a type of appreciation, it will bring a type of confidence, right? We can do that. Definitely we can do that. But this technique, what I discussed today, it's very basic things. Very basic things. This itself is not sufficient. What can be done is, we used to do here 40 hours program that's continuous 5 days, every day 8 hours. Provide a certificate. But we are thankful, sir. Yeah, we are thankful. In a very short time, you have also given an insight with the emotional aspects or the psychological aspects, which are very relevant and very required. But then I keep talking, and I want my counselors to please come forward and put questions. आपके पास जो doubts हैं तो sir को 10 minutes. We are giving only 5 to 10 minutes. Please, let's close that. Let's not waste sir's time and your time. किसी को सवाल हो तो please open your mic and carry on. How is Qamar silent today? Qamar, do you have any questions? Tehsina and many more. No, if I start asking question, it will take a long time. So I please brief one question. Brief one thing which is like really that doesn't need you to come back to me. तो वो सवाल कर लेना. जी. जी मतलब जैसा recent एक केस था, compromise होने के बाद जो जाना चाह रहे, लेकिन उससे पहले before कुछ क्लासेस जरूरी थे लड़की के, मतलब क्लाइंट 1 के लिए, लड़की के लिए. जब मैं समझी कि जाने के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता ही, सेशंस पहले क्रिएट करना था, उस बारे में बात करना था, लेकिन अब इट इज नॉट. I'm not understanding your question, madam. Sorry, can you repeat? Qamar, I request you to ask the relevant question. आज इस टॉपिक से सर ने जो टॉपिक हमको समझाया है उससे रिलेटेड कोई सवाल करिए, केसेस नहीं डिस्कस करिए. मिसेस मिर्जा, आपको कोई सवाल करना हो, या शबाना, मुनव्वर, आपने कोई करना हो, खतीजा, मसरत and all of you, why are you all so quiet? Please use the opportunity. Okay. I think I will take a few minutes, madam, to explain a very important thing. Please, sir, please. Today what we have discussed, what we have done, everything is related to counseling. And I have touched
the few techniques of counseling where we have more and more things pending in counseling itself. And it is not possible to do everything on a single session, and it will take its own course. Okay, let me give you some other important things. There is 3 more areas are there, and Afsar Jahan madam, she's with I hope she is very familiar with that. There is one more area known as conciliation. Conciliation is a very excellent part, which gives the conciliator to give his opinion. See, being a psychologist, being a counselor, not psychologist, counselor, being a counselor, we are not supposed to give our own ideas. Where in conciliation, we can give some ideas. Like this won't reach you can't reach the conclusion here. Better you go in this way. You use this technique, right? So भाई ऐसा करने से क्या भी नहीं होता, ऐसा करके देखो भी वैसा जो है we can see बहुत बारीकियां हैं इसमें, बहुत बारीकियां हैं. Counseling is different, conciliation is different, mediation is different, arbitration is different, and the wonderful technique we have, that is negotiation. That is entirely different. Negotiation is entirely different. Okay, I mean, I want to say much things on that. Once I have probed that area, such a wonderful area. Negotiation bolenge to, we have a different class and theories on that. Principal negotiation is there, hard negotiation is there, soft negotiation is there. Wonderful characteristics, features are there, through which you can success your clients' problems. So the conciliation is different, not like counseling. Mediation is different, arbitration is different. Hope inshallah in future, later on we'll learn step by step, we'll do that. First, inshallah. Yeah, be a good counselor. Yes, someone asked this. I missed that. That's what I explained about the conciliation, mediation, and arbitration. Jazakallah, sir. Walaikum salam. So anybody else has koi sawal hai kisi ka, or should we close the Can I come in here for a minute? Yes, doctor, please. Assalamu alaikum, sahab. I'm Dr. I'm a consultant psychiatrist. I'm working in the UK. This link was sent to me, and I have my whole family has known Mufti Sahib very well. My impression of this session was that it was very well conducted. I was very happy. Unfortunately, I could not join from the beginning. I could only join for the last few minutes. But what I heard and saw was extremely beneficial. I think the counselors will definitely appreciate and learn from your wide experience. I picked on your point about the last point about reconciliation, where you said that was the only technique where you could tell people what to do. You're quite right that the side, even you said the counselors cannot suggest what to do. It is for psychiatrists and psychologists also, the rule is the same, that you cannot say what to do. And if you are actually giving them solutions, then you are failing in your duty as a psychologist and as a counselor. So as a counselor, your duty is to provide. And I was really impressed with the kind of 5 senses presentation that you said, that how the environment has to be provided for them so that they can open up themselves and start talking. Because what happens is that, I'm sure you know very well as an experienced and senior marriage counselor, we do very little of marriage counseling in the UK, because as you know, the rate of marriages here in UK is very less, the percentage compared to India. And even in successful countries, about 40% marriages end up in divorce. And what the impression is that mostly it is the noise that is created between the couples when they are talking. So they are not talking, they're creating noise. And that is the main problem.
And the role of the counselors is to explain to them that you are not talking to each other. You are just talking at each other, which is the main difference. And I think if counselors can understand that they are not the one who are doing the talking, they are providing an environment All right, 10%. where people can listen to one person can listen to the other person. This is missing in all these marriage conflicts. And that is the important thing. I just wanted to come in because I know I don't want to take a long time of yours and the audience, but I was very impressed with the whole seminar. Thank you very much. Jazakumullah khair. Jazakallah, sir. Very good. Thanks a lot, sir, for your feedback and appreciation. And you have pointed out a right thing. Counselors, being a counselors, we are not supposed to talk more. We should be good observer, not the listener, not to hear anything. Just we have to observe. Rightly said by sir. Alhamdulillah. Jazakallah, sir. Jazakallah for your feedback. Yes. Any other questions? Yeah. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Sir, I had a question. How to deal two types of people in this? The first is introvert. Someone with. Sir, I'm not audible, sir, clearly. Can you little bit closer to your mic? So, was audible now? हाँ जी बोलिए. I'm audible now. Yes, sir. Yes, sir. Tell me, sir, please. Yeah. How to deal with two type of people? Someone are very introvert, and someone is like, मतलब मैं ही सही हूँ. तो ऐसे दो लोग से मतलब कैसा deal करते? Your question is, दो लोग बोलते हैं मैं ही सही हूँ, तो आप क्या करेंगे? That's the question. इंट्रोवर्ट में जल्दी खुलते नहीं है वो. अच्छा. तो प्रॉब्लम पूरा खुल के नहीं बताते, आधा बताते तो अपन सजेशन में गलत देते हैं लोग को, तो बात सुधरने जाके बात बिगड़ जाती है. तो ऐसे ही वक्त में अपन कैसा करना. और नेक्स्ट वन इज मतलब एकदम अपने सेल्फ डोमिनेंट रहते वो लोग, मतलब मेरी सही बात है बोल के. Okay. See, your question is, दो लोग आते हैं और बोलते हैं मैं सही हूँ. From their perspective, they are right. But it is the job of the counselor to to make them to understand in which part they are right, in which aspect the opponent, right, the opposite party or the second party who is wrong. They have to reveal it. The counselor should allow him or her to explain the reasons. They should provide the opportunity. Automatically, both they will understand. Something's what happened. There is a technique known as a role play. The role play, we keep changing the personalities. The person will have that person, the husband will have wife's personality in her. Wife will have the husband personality in her. And she will talk, presuming that she's a husband. She will tell in her own way, where he will come to know. So this is a technique. So you can use the technique during counseling also, but you should know what type of technique it is, how to handle it. If you do like that, definitely no one will say that I am right, you are wrong. You are wrong, I am right. No one will say that. Hope you got the answer. Yeah, thank you. Okay. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. सॉरी सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, तो आप माइक के करीब थोड़ा बात कीजिए ना. Sorry, still not audible, sir. Assalamu alaikum. Sometimes what I found is the problem what they express for this husband and wife fight is different from what they actually facing. मतलब जो बोल रहे वो fight actually होती नहीं, सच में वो लड़ाई नहीं होती जो वो लोग जाहिर कर रहे, होती कुछ और है. यानी कि स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकता है. ऐसे भी मतलब ये बोलते नहीं वो लोग, लेकिन मामूली चीजें एक्सप्रेस करने के ये लड़ाइयां सामने आते रहती, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं. लेकिन वो सॉल्व करने के बाद ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते. ऐसा भी केसेस मैंने मतलब सॉल्व किया. तो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह.
So एग्जाम what? जी जी आप बोलिए. स्पिरिचुअल भी ऐसे होते हैं और ये दो प्रॉब्लम्स भी अपार्ट फ्रॉम दे व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग, ये भी काउंसलर को गेस कर मतलब जज करना पड़ता है या फिर मतलब फाइंड करना पड़ता है. Definitely, it's a counselor's part. देखिए आप जो केस बता रहे हैं, confusion and conflict है इसमें. There are two things. Conflict is different, confusion is different. So इसको जो है हम समझना है. उन्होंने जो है कंफ्यूजन में है कि जो कौन से इश्यूज को पहले लाए, कौन से इश्यूज समझे. See, if you come to this, the next session जो पेपर जो नेक्स्ट बात करने वाले थे हम, आज नहीं हो सका, इंशाल्लाह some other day. तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट को कैसा समझा जाए, कौन सी चीज कॉन्फ्लिक्ट है. And there is a vast difference between confusion and conflict. Let me give you a small example by using this opportunity. See, एक person है, एक बंदा है. I will share the board, whiteboard here. यहाँ पर जो है एक गाड़ी से रुक गया है एक बंदा. He wants to go हैदराबाद. ठीक है, यहाँ पर आकर रुका है. He don't know to choose this path or this. कौन सा रास्ता जाना मिलकर मालूम नहीं है. What he will do? स्ट्रक होकर खड़ जाएगा लाइफ में. इसको नजर ना रही है कि जो ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, कौन सा रास्ते में जाएं. दिस इज नोन एज कंफ्यूजन. अगर कोई एक बंदा हमको खड़कर, भाई आई गिव द कॉन्फिडेंस, यू गो दिस वे, आंख बंद करके चले जाएगा. सब्जेक्ट टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर बोलने वाला बंदा कोई जो है पासर भाई है, आधा रास्ता जाने के बाद ही विल फील दैट ओहो हमें टाइम उधर चल जाना था क्या, ये रास्ता ठीक नहीं दिखता ना, उधर ही विल कम बैक. एंड फिर ये सोचेगा नहीं वो बंदा जो बोला वही सही है, फिर इधर जाएगा. सो दिस इज कंफ्यूजन. ये कंफ्यूजन में जो है इधर भी जाएगा, ना मुकम्मल कर पाएगा, ना मुकम्मल इधर कर पाएगा. सो दिस इज नॉट एज कंफ्यूजन. ऐसा जो है लाइफ में कई मामला थे जिसमें जो है दे डोंट बिलीव एनीवन, they don't believe anyone, they listen to everyone, they try to follow all steps. ये confusion, ये करना वो करना. Let us come to conflict. Mr. X, Mr. Y. Okay, Mr. X ही उनके wife Y is telling that भाई मैं बैंगलोर में जाकर रहना चाहते हैं. they are living in Chennai, समझ जाइए आप. बैंगलोर में रहना चाहते हैं because of the cold climate, and I want to I am intended to give education to my child there at Bangalore in so and so school, and we will purchase a good house there. मतलब purchase सब नहीं कर सकते वहाँ, किराए घर में रहना है. Now I am getting 50,000 rupees salary. I will try job there. If I get 70,000, we'll go there. We'll stay. I will satisfy your thoughts. बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, सब अच्छा रहेगा. पैसे कुछ जमा हो तो जमकर जो है after 5 years 10 years घर खरीद लेगी. At that time, it decides सब करने के बाद, he is getting offer from Hyderabad, telling that हैदराबाद में क्या है 1 lakh rupees salary with accommodation. Then he thinks at the same time he gets one more opportunity. New Delhi 2 lakh rupees salary with accommodation with school expenses पूरा जो है बच्चों को भी. Then he thinks क्या करेंगे बोलकर, वाइफ को प्रायोरिटी देना है, सेविंग को प्रायोरिटी देना है, ऑफर को प्रायोरिटी देना है, किसे देना है बोलकर. This is what known as conflict. Here he gives a priority. Then how to resolve it? He has to approach his wife saying that देखो माँ after 5 years यहाँ क्या बैंगलोर में रहे बोले थे, only to satisfy your chill climate. If you go there, definitely we will spend our money, we won't earn money. अब 5 साल के बाद ऐसा रहेंगे. Yes, न्यू दिल्ली चले गए बोले तो जरा संभाल लेंगे, एसी घर में रह जाएंगे, तुम जरा मैनेज कर लो. We'll jointly we'll work together. We can earn 2 lakh rupees where every month we can save 1 lakh rupees. थोड़ा ये जो है रेजोल्यूशन पार्ट में जो है ऐसा ही वर्क कर रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन. सो यू सेड अबाउट द केस दैट इज प्योरली कंफ्यूजन. वो कंफ्यूजन को तुम्हें उनको समझाना कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट इज कंफ्यूजन, एंड यू हैव टू ब्रिंग इट टू द रेजोल्यूशन पार्ट. देन यू हैव टू फॉलो अप, वर्क करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा. होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. People are introvert, they don't open up. Yes, doctor, yes, it's true. But it is the job of the counselor to identify what type of personality they are, whether they are paranoid, introvert, extrovert.
मतलब यार क्या बोलकर जो है बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट है ना क्या, उसको जो है पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है. They have to analyze by seeing, by listening to the client itself. They have to come to the conclusion and they have to take it in that way. If they find any problematic, definitely they have to refer. They should seek assistance from the clinical psychologist. They should not cheat the client. They are not supposed to do that, which is against the ethics. And after 5 months, 6 months, you will repeat the same case will come to you and they will say that failure. Better कि जो है you refer that matter. You know your limit. You draw a line, you stay there. Yes. Yes, Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. So I think, can we, with your permission, wind up the session now? Please, Sir, I I have have- one question. Yes, ma'am. Please. Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. Here, one question I'm having in relation to some paranormal activity. Usually, girls at the time of puberty, they are being, I don't know, but people say this. So instead of counseling, giving a counseling to the girl, parents say that she has been under the influence of a paranormal activity. Some power has taken up. So how to convince and how to deal with the girl who is going through this and because we don't know what is exactly the reason. So how to handle such situations? Good. If you find any clients like this, then you have to inform her parents that your daughter is facing some serious problem, which you are not, you don't know about that. And you can ask them to take the doctor to the appropriate practitioner, the psychologist. Then the psychologist will decide to refer that matter to the clinical psychologist or to the psychiatrist, because that in the adolescent, they have a lot of mood swings are there and they have a lot of hormonal changes. They don't know how to say. The parents, I'm not sure that how much the parents are having a good rapport with the child discussing on this matter. So better you should approach the psychologist. This is the first time I'm using the word the psychologist. All counselors are not psychologists. Psychologists are different, counselors are different. Psychologists, they are entirely different. Counselors, it's a skillful person, professional person who handles with these techniques alone. So better ask them to take some psychologist. Let her diagnose that. Yeah, my next question is that, sir, how can a wife counsel her husband? Because if he is a very dominating person and very much egoistic, so how to make him understand that this is not going to work when dealing with family? Okay, I have very little experience, madam, but I have heard through my teachers, a lot of professors, they said that the successful counselors at clinic or center is failure at home. So better don't try with your spouses. No, I'm just asking. I'm not saying. No. See, if you want to live because I have saying about an alcoholic husband. Usually, many are alcoholic. Usually at the lower strata people, where the man is abusing the wife and beating, and in the morning he just asks for forgiveness of her, and he again in the evening he comes back to his own actions. So in this way, if the wife is explaining him even the disadvantages and the side effects what he is doing, and even the ill effects of the alcohol that he is having on a regular basis. So in such situations, can the wife be a counselor to such a husband? That I'm asking. Wife, no husband will listen to wife in this matter. No wife will listen to husband in this matter. I am a psychologist, I am a counselor, conciliator, everything. While I enter my home, I am nothing. I don't try any techniques on my family. Okay. It's failure. It's failure. It's not going to work. Let us don't try that. Same person, father is doctor, son is a patient. It won't work. So better don't do that. So what I will suggest is you can refer to any well-wisher or any good counselor. You yourself is a counselor. I'm not talking about the client, not you. The client itself is a counselor.
at that time, they can take some professional assistance from the closest person, not the very close person, not the relative, not the good friends. They have to choose some other person. It won't work. So there are techniques are there. Alcoholic partners, they have technique. In counseling, what we can do is from the initial stage itself, we have to go with the CBT. CBT will help them. Definitely. The reason why he is involving in marriage or that alcohol, we have to make, okay, that's, it depends from the patient to patient. Someone may have some other problem, some may habitually, some may be doing, some may having for fun. We should make him to understand, we have to change the intention. So subconsciously you have to work on that. Then only it can success. So there's one question. Of course, only one thing I would like to say here in a very short time. Mufti Sahib is here. See, Alhamdulillah, you are doing a wonderful job. That really I appreciate you. No one in India is doing this. Yes, a lot of people are doing, but I see a good volume here. Alhamdulillah, more than 30 people involving in this activity. Really fantastic. Alhamdulillah, I'm thankful to Almighty Allah. I'm thankful to Mufti Sahib and you people. Alhamdulillah, it's a joint activity is very, very important. Please do this. And I would like to say there are certain formats out there. Number one, you create any one head office in your Hyderabad where daily activity should take place. You should have the formats of counseling and regular activities. Number one. Number two, we do have. We are running on the same page. We do have our center. Our centers spread around 6 constituencies, 6 divisions of the state, constituency divisions. Likewise, we have a central office also located for All India Milli Council. And then we also do follow up with because we just initiated the work and we are doing the follow up with the counselors themselves, every weekend. We sit with the counselors. We are trying to speak to them if they are facing any difficulty in counseling because it's all very new journey to them all. They are also undergoing the training likewise simultaneously. So we are following up, sir. Our core team is again, we are honored to have Mufti Sahab on our as the head of this entire system. Mashallah. Or the mechanism to guide us. Though sir is expert in Sharia law, but then I as an advocate still learn from him because he gives us insights when during examination also he has vast knowledge of different areas. So we are benefiting from him. Likewise, on the legal side, I do the follow-up with all the counselors. If we have any, we most of the time, we also get the cases. Here in Hyderabad, what we have observed is most of the time when the clients come, they come with already, registering FIRs against each other and then coming to us. So what we do is we call the other side. We try to sort out. Most of the time, their intention is to free themselves from this marriage. So they go for this extreme step, go to police station and file an FIR. So in those situations also, what we do is we call them. We say what they need actually. We don't go into deep because it's already too far. So we try to withdraw the cases. We make the other party, we make the applicants withdraw the cases. Then we draft an MOU among them that they won't proceed in any court of law further. And whatever solution is given by our counseling center, it should be acceptable by both the parties. So this is also done here. Legal side, I am trying to, share my services to them, whatever possible. This is very, very important. Yeah. See, wherever I go, I ask. Only thing is, we were from your, this today's session, what we felt. Actually, we had that when we were working at Hajj House, when I told you. We wanted a clinical psychologist, which was absent there also on that forum where we applied to the government and it didn't work. But as such, we have Dr. George Reddy with us, who is a psychiatrist, and there are cases which need the intervention of psychiatrists according to our experience. So we have him on our side for our help, And also he has his colleagues who are clinical psychologists who can help us, intervene at the psychological, clinical psychologist aspect. Those side of intervention is taken care.
So inshallah, this is all what we are trying to do. And sir, if any more questions, or if with your permission, should we Only wind one up? thing, only one thing. You try to start this pre-marriage counseling. You That again, I put the burden on, throw the burden or put the burden towards Mufti Sahab. I have no other option. He is the person where, it's like we all, readily have the solutions. He's always ready to help us. Inshallah, we'll do, sir. Inshallah. Now, what else? Anybody else is having any question, or should we please wind up? I request Mufti Sahab to just let me know. Can I wind up the session now? सर उमर सर आप हैं क्या हम इस सेशन को क्लोज कर दें आपकी इजाजत से? It's 1:30. But the time is already up. I think sir might be busy, or maybe he's handling, doing multitasking. Anyway, sir, thank you so much, sir. आपने हम तमाम participants की और especially sir आपकी मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपनी you have shared your rich knowledge with us. आपका vast experience आपने हमारे साथ share किया और हमको enlighten किया. Hope we'll be looking forward for more such sessions with you, inshallah. And again, I wholeheartedly thank each and every participant here. Of course, Mufti Sahab, I'm so thankful to you. At times, I might have irritated you for having kept pressurizing him for these sessions as like for past 8 months. And then, of course, he wanted to give the best to us, and बहुत best हमको जो है training देने की उनकी ये हमेशा कोशिश रही, and he did that. अपने promises को उन्होंने हमेशा रखा, fulfill किया. I hope ये कारवां आगे चलेगा. और आज जितने लोग आप यहाँ जुड़े हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के सेंटर्स आप एस्टैब्लिश करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, तो हमने तरीक़ेकार ये अपनाया है कि जो कोई मेंबर चाहता है कि वो काउंसलिंग से जुड़े हमारे साथ, तो वो अपनी एक जगह, जितने हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती जगह एक कमरे को उन्होंने एक काउंसलिंग सेंटर का रूप दिया और वो हमारे साथ जुड़े और अपने मोहल्ले में जो है इसको एडवर्टाइज किया, पब्लिसाइज किया और साथ में फिर वो हमसे ट्रेनिंग हासिल करते हैं और हम उनसे जुड़े रहते हैं. वी फॉलो अप विद देम. तो अगर आप लोग जहाँ कहीं भी हो, डजंट मैटर, आप तेलंगाना में नहीं, कहीं और किसी और स्टेट में भी हो, तो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के बैनर के अंदर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं. काइंडली टेक द इनिशिएटिव. आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुफ्ती साहब से रब्त करें या मुझसे रब्त करें. थैंक यू सो मच सर. वंस अगेन आई हार्टिली थैंक यू फॉर द एनरिचिंग एंड एनलाइटनिंग सेशन टू ऑल आवर काउंसलर्स. और मैं आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक छोटा सा आप हमें जो टेस्ट मुफ्ती साहब ने हमें कहा था कि लेंगे हमारे काउंसलर्स के लिए, इफ यू कैन जस्ट प्रिपेयर अ स्मॉल क्वेश्चनर सो दैट दे गिव यू द you will know that how better we understood how was our learning. और इसी के साथ हम सर्टिफाई भी कर देंगे इंशाल्लाह. Shall I will try to send on Google page question बना के देता हूँ इंशाल्लाह in a couple of days. You can share it with these people and you can take it up inshallah. बहुत शुक्रिया सर. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you so much for joining us. I thank each and every participant for being patient and for spending, lot of मतलब आपके precious time से आपने सीखने की कोशिश की. अल्लाह हमारे सीखने सिखाने को कबूल फरमाए और इस कारवां को आगे ले चले. And I thank मुफ्ती साहब once again कि आपने हमको जो ये मौका फराहम किया, हम ट्रेन होके वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी उठाएं. Thank you so much उमर सर. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन.